वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, डेफिनेशन ऑफ अ फ्रेज एंड अ क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ रखें। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। व्हाट इज अ सेंटेंस? इन सिंपल, it is a combination of words. Words are by itself convey little meaning like apples, birds, etc., but give image of something. A sentence is complete. It has a subject and it tells something about that subject. But in conversation, a single word or phrase may replace a full sentence. For example, the boy caught the ball. She checked her messages on the cell phone. तो सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं बेसिकली, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं, जबकि वर्ड्स भी कुछ मीनिंग ज़रूर कन्वे कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है एप्पल और बर्ड की। लेकिन कॉन्वर्सेशन में हम कई कई सिचुएशन में वर्ड और फ्रेज भी फुल सेंटेंस के प्लेसमेंट पे यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड फ्रेज यूज हुआ है। देखते हैं कि फ्रेज क्या होते हैं। The word phrase is a group of two or more words functioning as a meaningful unit within a sentence or clause. Or a phrase is a group of words that express a meaning or idea but don't necessarily form a complete sentence. It's a way to convey using a few words together. Short. For example, in the morning here is indicating time with great enthusiasm, describing a feeling. फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज बेसिकली टू और मोर वर्ड्स होते हैं जो कि एक मीनिंग कन्वे करते हैं किसी सेंटेंस में या क्लॉज में, या किसी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। आप कह सकते हैं कि फ्यू वर्ड्स में आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया इन द मॉर्निंग, यहाँ पे सुबह के वक्त को बताया गया है। विद ग्रेट एंथुजियाज्म, यहाँ पे फीलिंग को बताया गया है। अगेन हियर वर्ड क्लॉज यूज हुआ है। अब हम देखते हैं क्लॉज क्या होते हैं। Clause is a group of words that contains a subject and a predicate. Subject, the person or thing, whereas predicate, action or description. Subject tells who or what is doing something, whereas predicate, what's happening or being described. For example, the dog runs. Here, the dog is subject and run predicate. Clause क्या होते हैं? क्लॉज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये भी, जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट कोई पर्सन या कोई चीज़ हो सकती है। वेयरएज प्रेडिकेट क्या होता है? एक्शन और डिस्क्रिप्शन होती है उसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हु और व्हाट इज डूइंग समथिंग, और प्रेडिकेट व्हाट्स हैपनिंग और बीइंग डिस्क्राइब्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं, द डॉग रन्स। सब्जेक्ट क्या है? कुत्ता। तो कुत्ता यहाँ पे क्या कर रहा है? भाग रहा है। भागने का काम जो है कुत्ता कर रहा है। कौन काम कर रहा है? डॉग। और क्या कर रहा है? भागने का काम कर रहा है, रन्स। तो इस तरह से। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट क्लॉज and dependent clause. Dependent clause. This clause can stand alone as a complete sentence. For example, he went to the store. Independent clause क्या है? ये एक stand alone complete sentence होता है। इसकी एग्जाम्पल है कि he went to the store. Whereas dependent clause. This clause cannot stand alone and needs an independent clause to form a complete sentence, such as although it was raining,
He went to the store. डिपेंडेंट क्लॉज एज द नेम सजेस्ट, ये डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे इसी सेंटेंस में। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ही वेंट टू द स्टोर जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इस पर डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रही है। So these examples show how clauses can function both independently and dependently within sentences. Finally recap करते हैं कि हम क्या टॉपिक देखें। सबसे पहले हमने सेंटेंस की डेफिनेशन देखी, a group of words expressing a complete thought, then phrase, a group of words working together without a subject and a predicate, and finally clause, a group of words with a subject and predicate. All right. If you have any questions or need any clarification, feel free to reach out to me by email, and share please this with others so that they can also learn basics. Subscribe to my channel for more such content. Thank you all for watching this video.